तक के इस लाइव शो में आपका इस्तकबाल करता हूं और दो तरफा जो है शुभकामनाएं चलेंगी। एक उनको जो आज होली खेल रहे हैं यानी कि दुल्हड़ी बना रहे हैं और कल होलिका दहन कर चुके हैं, और ऐसे भी लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं जो आज होलिका दहन करेंगे रात को और कल होली खेलेंगे, क्योंकि इस बार जो होली है वो 2 दिन हो गई है, 7 तारीख को और 8 तारीख को। तो 7 आज तारीख है तो आज खेली जा रही है, कई जगह पर महाराष्ट्र है या और दूसरे स्पेसेस हैं वहाँ पर आज होली खेली जा रही है, और कल जो है उत्तर भारत में ज़्यादातर होली खेली जाएगी। तो आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं और आप होली के रंगों में सराबोर रहिए और इसके साथ साथ खबरों के रंगों से भी 2-4 होते रहिए। उसके लिए मैं आया हूँ, आपसे बात करूंगा। आप भी थोड़ा सा गुलाल खबरों का जो अपने कमेंट्स हैं, अपने पोल में अपनी राय शुमारी है वो करते रहिएगा और मैं आपको खबर बताता रहूँगा। दरअसल राहुल गांधी को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। राहुल गांधी एक यात्रा पर लंदन गए हुए हैं, ये कोई छुट्टियों की यात्रा नहीं है। दरअसल शुरुआत में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फेलो हैं, वहाँ पर उनका एक लेक्चर था, एक तरह की एक प्रेजेंटेशन थी, उस पर उनको बोलना था। बोले, खूब अच्छा बोले, जिसमें ख़ास तौर पर वो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोले, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बोले, कुछ दिक्कत परेशानियां हैं तो उसको लेकर बोले। इसके साथ साथ उसके बाद उनका IJA यानी कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन में एक बातचीत थी, चिट-चैट थी, उसको किया। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक मीटिंग काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं, वो हुई, और अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर बोले हैं। दरअसल जो इस समय अपोजिशन में पार्टी है ब्रिटेन में, लेबर पार्टी, वो उसकी वजह से यानी कि उनके जो सांसद हैं एक वीरेंद्र शर्मा, उनकी तरफ से उनको इनविटेशन मिला और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने वही कहा जो वो अक्सर बोलते आए हैं। और दरअसल ये पूरा वाकया जो है एक मजाक से शुरू हुआ। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कुछ बोलने पहुंचे तब उनका माइक्रोफोन खराब हो गया, यानी कि जो माइक होता है वो खराब हुआ। इसके साथ साथ जो उन्होंने जिक्र किया तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से या कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से ये माइक्रोफोन या माइक खराब हुआ है। भारत में तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और हमें बोलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता। ये अपने आप में कितनी बड़ी डेमोक्रेसी का दमन करने वाली बात है या डेमोक्रेसी खत्म करने वाली बात है। राहुल गांधी की ये बात जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल उनका एक चिट चैट शो या फिर कह सकते हैं कि लोगों के बीच में बातचीत का एक दौर होना था, और ये चौथम हाउस में जो ये बातचीत हुई उसमें काफ़ी सारी बातें निकली। उसमें ज़्यादातर बातें जो हैं वो RSS BJP को लेकर कहते, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने बात बताई। इसके अलावा इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी में नुकसान होता है, अगर इंडियन डेमोक्रेसी को किसी भी तरह से कोई डेंट लगता है तो ये पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया भर की चिंता बन जानी चाहिए। उसका कारण ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी है। इसलिए चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, उन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि इंडियन डेमोक्रेसी में कमजोरी ना आए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी जो है मजबूत बनी रहे। इसके साथ साथ कई सारे लोगों ने जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हम अच्छे से बखूबी जानते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी संसद को, अपनी डेमोक्रेसी यानी कि अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत, बेहतर, अच्छा बनाए रखें, और इसका काम भी हमें करना है। लेकिन सबकी सहूलियत जो है वो इस बात में है कि हम इस बात की चिंता जरूर करें। देखिए, उन्होंने काफी कुछ कहा है और इस समय चर्चा में भी है। जो उनसे एक सवाल पूछा गया तो वो जो सवाल था उन्होंने पूछा जिनके फादर यहाँ पर RSS में काम कर चुके थे, तो उन्होंने जो सवाल किया वो RSS से एसोसिएटेड होकर बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि RSS से ही चीज़ें खराब हो रही हैं? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ भी काम किया है और चीज़ों को समझा है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में नजर आती हैं, यानी कि विरोधाभास में नजर आती हैं। इस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया। राहुल गांधी की पहले तो मैं आपको उस बात को सुनाता हूं जिस पर उन्होंने RSS और BJP को लेकर अपनी बात कही। ये लगातार जब हम देख रहे हैं कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, जलीश भाई एक सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे वो और किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग हो,
ब्रिटेन हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, जर्नलिस्ट से किसी भी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो 2-3 बातें करना नहीं भूल रहे हैं। एक तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका जो एक्सपीरियंस है उससे उन्होंने लोगों की आवाज़ को सुना है। इसके साथ साथ जो देश की हालत है, देश में जो इस वक्त स्थिति है, उसमें अपनी सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल कर बीजेपी गवर्नमेंट जो है अपने हितों को साध रही है। और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो आरएसएस की विचारधारा है वो काम कर रही है। ये राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते आए हैं और ब्रिटेन में भी इन्हीं बातों को कहते रहे हैं। बीजेपी को इससे परेशानी हो रही है। बीजेपी को किस तरह से परेशानी हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप राहुल गांधी की इस बात को सुनिए। राहुल गांधी की इस बात को मैं आपको सुनाता हूं, जिसमें महिला ने सवाल पूछा, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया आरएसएस और बीजेपी को लेकर। Here's my question to Pata. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. राहुल गांधी ने कि अगर इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स होती है या उसको कमजोरी मिलती है तो इस प्लेनेट की डेमोक्रेसी पर नुकसान होने वाला है, यानी कि धरती पर, यानी कि उनका मानना यह था कि जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज चल रही हैं उनका नुकसान होगा। यह बहुत सीरियस इशू है। राहुल गांधी की इस बात को बहुत बड़े चश्मे से देखा जा रहा है, बहुत बड़े तरीके से समझा जा रहा है, इसके मायने बहुत हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिम्मेवारी पता है, हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है और लोगों को भी इसमें देखना होगा। उन्होंने कहा कि इफ इंडियन डेमोक्रेसी कोलैप्स तो इस पूरे प्लेनेट की डेमोक्रेसीज जो हैं, अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेसी चल रही हैं, उनको चिंता करनी होगी, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो अमेरिका की हो। माना जाता है कि ब्रिटेन अमेरिका दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है और जो वहाँ डेमोक्रेसी चल रही है वो काफ़ी पूर्व से चल रही है। और इसके साथ साथ अगर इंडियन डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं खराबी आती है, कहीं ना कहीं कमजोरी आती है, तो ये पूरे के पूरे प्लेनेट की चिंता, यानी कि प्लेनेट का मतलब ये देशों से है। यहां पर ज्योग्राफिकली नहीं, यहां पर हमें समझना होगा हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली, या फिर जिस तरीके से पॉलिटिकली चीजें चल रही हैं। तो पॉलिटिकली क्या चीजें चल रही हैं, देशों में क्या व्यवस्थाएं होती है, हल्के अंदाज में समझेंगे तो या तो तानाशाही होती है, या आर्मी की हुकूमत होती है, या फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी है। यही जो दुनिया भर के देश हैं वहां पर व्यवस्थाएं हैं। और डेमोक्रेसी जहां पर है वहां पर स्थिति अच्छी है। इंडिया में भी जब डेमोक्रेसी आई है तब से लेकर स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन अब वो बीते 8-9 सालों का जब जिक्र कर रहे हैं तो उसमें बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, लेकिन बात यहीं तक हो रही है। वो कह रहे हैं कि वैचारिक रूप से जो थोपा जा रहा है, आरएसएस जो लेकर आ रहा है, उसको बीजेपी जो है वो व्यवस्था कर रही है और वो आरएसएस को फासिस्ट बताते हैं। ये पूरी की पूरी फासिस्ट विचारधारा है जिससे नुकसान हो रहा है आरएसएस पर। उन्होंने जो कड़े तंज में कहा है उसको सुनिए जरा। States, I think 146 days. You only finished in January. So why didn't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And
I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So से आरएसएस को लेकर उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया और वो सीधे सीधे तौर पर वो इस बात को कई जगह जाहिर करते हैं। और ये जो बड़े मंच हैं, इसमें देखिए जो ग्रैंड कमेटी में कल उनकी मीटिंग हुई है, पहले वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी जो अपोजिशन में है, उनके सांसद ने उनको इन्वाइट किया और उसके बाद बोलने के लिए स्पेस दिया, बोले। उसके बाद जो है वो ग्रैंड कमेटी जो स्पेस था जहाँ पर करीब 90 डेलीगेट्स थे, इसमें वहाँ के कुछ एमपीज थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या फिर जर्नलिस्ट थे, या कुछ और बड़े ओहदों पर पहुंचे हुए लोग थे। उनके सामने उनकी एक बातचीत रही जिसमें लोगों ने भी सवाल किए, और ऐसे में उन सभी मसलों पर जिक्र हुआ जिसका जिक्र वो लगातार करते हैं, चाहे वो आरएसएस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे सरकारी एजेंसियों का है, चाहे लोकतंत्र का है, चाहे जीएसटी या इसके अलावा नोटबंदी का है। उन्होंने जीएसटी नोटबंदी का भी बात की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी को लेकर पहले से ही आशंकाएं जाहिर कर दी गई थी, नोटबंदी को लेकर पहले ही मनाही कर दी गई थी कि इस तरह का काम ना किया जाए क्योंकि ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान देगा। लेकिन उसके बावजूद भी किया गया। सरकार ने इस तरह के कदमों को उठाया जो जीएसटी नोटबंदी के जैसे रहे और वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह रहे। देखिए, वो लगातार जब बात कर रहे हैं तो वो इन बातों को लेकर कर रहे हैं कि बीजेपी जो कुछ कर रही है वो आरएसएस की वजह से कर रही है। आरएसएस एक विचार, एक फासिस्ट विचार है जिसको लेकर लगातार हम अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब वो डेमोक्रेसी को भी कोलैप्स या कहें कि तोड़ने या अपने हिसाब से स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। ये राहुल गांधी के आरोप जो हैं वो बहुत पहले से हैं, लेकिन बड़े मंचों से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, चाहे आईजीए से हो या अभी जिस तरीके से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, वहां पर इस तरह की चीजों को बोल रहे हैं। तो दो चीजें एक तो बार बार इस पूरी कन्वर्सेशन में आती हैं। एक तो ये कि बीजेपी जिस तरीके से इसको ले रही है, वो कह रही है कि साहब अपने देश की बातें विदेश में जाके करना, कुछ कमियां खामियां हैं तो उसको इस तरह से जाहिर करना, ये कितना सही है। तो कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि ये बात कहने वाली बात है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी को स्पेस मिला है तो वो इस बात को कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कन्विक्शन नजर आता है जो राहुल गांधी के अंदर है। वो अपनी बात को कहीं भी हो वो कहते हैं तो कहते हैं, मतलब ये उन्होंने पक्का कर रखा है, चाहे इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो, फायदा हो, उस स्पेस में वो जाकर नहीं रहेंगे। उनको लगता है कि वैचारिक रूप से ये गड़बड़ है तो उसको कहा जाएगा। जो उनको गड़बड़ लगती है उसको कहने में उनको किसी भी तरह का गुरेज, किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं नजर आ रही है। ये बड़ी बात है। राहुल गांधी जिस अब कहते हैं टर्फ पिच पर खेलना, ये टर्फ पिच पर जिस तरह की खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उन्होंने बहुत एग्रेसिव मोड को अपनाया हुआ है। अब वो पीछे से इस बात को नहीं सोच रहे कि बाद में पार्टी या टीम का क्या हाल होगा, पहले टर्फ पिच पर मैं खुद ही मोर्चा संभालता हूं और किसी भी तरीके से
चीजों को रुकने नहीं दिया जाएगा। जो कुछ हो रहा है उसको डिलीवर करना है, जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ लग रहा है कि इस पर बात की जानी चाहिए, वो बात की जा रही है। देखिए राहुल गांधी जिन बातों को बोल रहे हैं उसमें मैंने आपको आरएसएस बीजेपी को लेकर उनकी बात को सुनाया, इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर जो उन्होंने कहा वो सुनाया, लेकिन असली इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उनके जो विचार हैं वो भी इस वक्त जो है काफी ज्यादा सुने जा रहे हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सुनिए। Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So, it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India. Right? And what you do about it is of course up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. देखिए बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से उन्होंने कहा है। एक बात और है, उन्होंने कहा कि बहुत बेतुका ख्याल है, बहुत बेकार का ख्याल है जो रखा जा रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये बात कहीं भी समझ में नहीं आती, ये बात कहीं जाने वाली बात नहीं है। देखिए ये जो बात है इसको दो तरीके से समझना होगा। एक तो बार बार जो बीजेपी इस बात को कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं, तो ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। कठिन क्या, मुश्किल क्या, असंभव है। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस शुरुआती दौर में पार्टी नहीं थी, एक तरह से एक मंच था जो भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहा था। 137 साल पहले एक मंच बना, उसके बाद जो है वो पार्टी में तब्दील हुआ, और पार्टी में तब्दील हुआ उसके बाद वो 60 साल इस देश की राजनीति में सबसे ऊपर रहता है। तो ऐसे में इस तरीके से बात कह देना बड़ी बेईमानी लगती है कि जहां उस पार्टी के सब लोग अवेलेबल हो। हाँ, कुछ पीछे हो सकते हैं, कुछ रूटे हो सकते हैं, कुछ धीमे हो सकते हैं, लेकिन अवेलेबल हैं। ऐसे ही अब बीजेपी को लेकर जो बात कही जाती है कि अगले 50 साल तक वो राजनीति में बने रहेंगे या 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे, तो सत्ता नशी होना अलग अलग बात है, लेकिन 50 साल तक बने रहेंगे क्योंकि वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन का फैलाव कर रहे हैं। यही बात जब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब तरीके से कह दिया जाता है कि कांग्रेस जो है खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस खत्म होने की जो ख्याल है ये बहुत बेतुका ख्याल है। इसके बारे में सोचना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में कह दिया जाता है, लेकिन इसके जो कोर इश्यूज हैं इसके बारे में सोचा नहीं जाता, इसको कहीं भी समझा भी नहीं जाता है। लेकिन देखिए बीजेपी जो है जिस तरीके से प्रहार कर रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दौर से ही कर रही हो कि कभी वो टी शर्ट को लेकर आते हैं, कभी किसी और ड्रेसअप पर बात करते हैं, या कोई और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने 2 रोज पहले कहा है कि दाढ़ी बढ़ा लेना, अपने लुक को चेंज कर लेना, ये ब्रांडिंग के पुराने चीजें होंगी। अब आपको काम करना होगा, अब ऐसे चलेगा नहीं। ब्रांडिंग पर वो बोलने लगते हैं और वो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में आप वो लोग उन लोगों को शामिल कर लेते हैं जो भारत जोड़ो की परिकल्पना करते हैं, ये उनकी तरफ से था। लेकिन बीजेपी में अभी काफी ज्यादा छटपटाहट है। आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 6-8 महीने से लगातार जिस तरीके से बोल रहे हैं या बने हुए हैं, वो मौजूद बने हुए हैं, प्रासंगिक जिसे कहते हैं ना, रेलिवेंटिक, उनके बिना अब राजनीति पर बात नहीं की जा रही है।
ठीक है, वो उतने पॉपुलर नेता नहीं है जितने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं डेंट करने वाली स्थिति में बढ़ते चले आ रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी है वो भी स्ट्रांग तरीके से इसको अपोज कर रही है। बीजेपी लगातार, चाहे वो मैं बता रहा हूं कि अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर ने काफी कुछ बोला है, इसके अलावा जेपी नड्डा है, इसके अलावा तमाम और नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह से विदेश में जाकर ये सब बातें करना कितना ठीक है, लेकिन उसके पैरेलली जो है इस बात को समर्थन देने वाले, बल देने वाले भी लोग हैं कि नहीं, उनकी बात है, उनको कहने का अधिकार है, खूब अधिकार है। तो अभी बीजेपी के जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। केंद्र में मंत्री भी हैं, आईएनबी मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है सुनिए जरा। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें? आप भारत के साथ विश्वासघात मत करिए राहुल गांधी जी। That our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रशंसन खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रशंसन खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। देखिए, जो बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अमेरिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े, ऐसा कमजोर भारत नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि किसी को हस्तक्षेप करना है या किसी को जरूरी है कि वो हमारे मामलों में बोला। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ये तक कहा कि हम इसके लिए उत्तरदायी हैं, हमें इसके लिए काम करना होगा। अगर इंडियन डेमोक्रेसी, उन्होंने उस बात को बताया कि इंडियन डेमोक्रेसी अगर कमजोर होती है तो पूरे इस दुनिया भर की डेमोक्रेसीज पर सवाल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये केवल कहने भर के लिए नहीं है, वाकई में है ऐसा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में अगर इंडिया के लोकतंत्र पर, इंडिया के इस पर कि सवाल आते हैं कि डेमोक्रेसी को लेकर नुकसान हो सकता है, अब ये एक बड़ा जो है सवाल हो जाता है। और चूंकि
सरकारी एजेंसीज को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चन मार्क्स हो रहे हैं कि साहब क्या ईडी, सीबीआई, आईटी ये सरकार के हिसाब से काम कर रही है। हालांकि ये सवाल अगर 10 साल पहले चले जाइएगा तो उल्टे आते थे, वैसे वर्षा आते थे कि बीजेपी ये कहती थी कि जो कांग्रेस है वो इन जो एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो इस्तेमाल करने वाली बात है ये तो दूसरी रही, लेकिन जो अभी की यथार्थ वाली स्थिति है उसमें बात की जा रही है कि कौन सी पार्टी रह जाएगी और कौन सी पार्टी खत्म हो जाएगी, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। तो चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, इन दोनों पार्टियों के खत्म होने की बात करना थोड़ा सा झूठा लगता है। ऐसे में जब सवाल किया गया कि कांग्रेस के खत्म होने वाली बात पर, तो राहुल गांधी ने चैथम हाउस में ब्रिटेन में ये साफ तौर पर कहा कि ये बात जो है बिल्कुल बेकार की है। क्योंकि आप समझिए तो समझ में आएगा कि 9 साल पहले 10 साल तक 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का शासन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब सरकार में प्रधानमंत्री थे, हम जानते हैं। और इससे पहले भी अगर देखें तो देश भर में जो अभी 75 साल गुजरे हैं उसमें 60 साल जो है बीजेपी कांग्रेस जो है वो सत्ता में रही, या सत्ता के सहयोग, सत्ता में जो भी रहा वो उसके सहयोग से रहा। ऐसे में ये इतनी जल्दी ये सब कह देना ये बहुत बेकार है कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। ये सब जो है बेतुका ख्याल है और इस ख्याल को निकाल देना ही बेहतर है। क्योंकि बात लगातार जब ये हो रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो बीजेपी का अभियान है ना, ये मान लेना ये गलत है। ऐसे ही अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए कि बीजेपी जो है कुछ सालों के लिए सत्ता में है या पार्टी जो है वो काम कर रही है उसके बाद खत्म हो जाएगी, ये भी बेकार बात है। क्योंकि अगर देखें तो बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है, बीजेपी का जो दमदारी है, बीजेपी का जो काडर है वो तो आरएसएस से आ रहा है। आरएसएस 100 साल का होने वाला है, 1925 में बना था और 2023 चल रहा है। तो आप समझिए कि एक जो संगठन है जो उसको दम दे रहा है, जो उसमें जान फूंक रहा है, वो 100 साल से चल रहा है। इसलिए इस बात को भी कहना बेकार बात होगी कि आरएसएस इतना ही रहेगा या लिमिटेड रहेगा। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस्ट बात कहते हैं उसमें चीजों को समझा जाता है, उसमें इस बात को ये समझा जाता है। If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not. I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally. You know, that's not the case, right? But there is a set of changes that are taking place in India, and the Congress party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually a ridiculous idea. से राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार की बात है। इस बात को दम देना भी बेकार के। हमारे साथ कुछ देर में हमारे साथी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे इसी विषय पर कि किस तरीके से जो राहुल गांधी बड़े कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि ये सब बात करना बिल्कुल बेमानी है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये कहीं भी रेलिवेंटिक नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया है, चाहे मैं कह रहा हूं कि वो उन्होंने लंदन में किया है, कैम्ब्रिज में किया है, कैम्ब्रिज मतलब लंदन में अलग से उन्होंने इसका यूज़ किया या कहीं बात कही, या फिर जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब अपनी बात कर रहे थे तब इसको कहा, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बात कर रहे थे तब इस बात को कहा, भारतीय पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद में इस बात को कह रहे थे तब भी इसको कहा, और कांग्रेस के अधिवेशन में मैं मौजूद था तब भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से ही अपनी बात को शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने चैथम हाउस लंदन में क्या कहा है उसको सुनिए। So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped.
some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey, but it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey, but it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience. सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो चल रहे थे उसमें कम्युनिकेशन हुआ, जिस रफ्तार से वो निकले उसके साथ साथ लोगों का भी उनके साथ जुड़ाव बढ़ता चला गया। चैथम हाउस की कुछ तस्वीरों को दिखाते रहिए और इसमें हम देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें बीजेपी को लेकर या कहें आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा कि ये फासिस्ट तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, और आरएसएस को लेकर जिस तरीके से वो मुखर थे उसको एक बार सुनते हैं। States, I think 146 days. You only finished in January. So why don't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you. Thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is a
you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So कि जिस तरीके से आरएसएस को लेकर वो देश में ही नहीं और विदेश में जो बातें कह रहे हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक लाइन को पकड़े हुए। उन्होंने कहा ये फासिस्ट यानी कि अपने हिसाब से थोपने वाली व्यवस्थाओं में शामिल है। आरएसएस को लेकर जो है वो बीजेपी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बोलते हैं उसमें एक समझ में आता है कि एक तरीका जो है उन्होंने पकड़ा हुआ। उन्होंने कहा है कि अगर ये वैचारिक रूप से कमज़ोर नहीं हुए तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम सोशल फैब्रिक को मजबूत करने के लिए चाहे भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, चाहे हम और व्यवस्थाओं के ज़रिए जो है, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अब जो है नई यात्रा चालू हो गई है, उसमें हम सोशल फैब्रिक का जो है सबसे पहले ख्याल रखेंगे कि इस देश का सोशल फैब्रिक सही हो, यानी कि लोगों के बीच में चाहे वो तमाम दूसरे पंथों से आते हों, तमाम दूसरी जातियों से आते हों, उनका आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो ये है। इसके साथ साथ जिस तरीके से शुरुआत में बात मैंने बताई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जैसे वो पहुँचे और वहाँ पर उनका माइक्रोफोन यानी कि जिससे बात करते हैं जो माइक था वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ख़राब था, तो वो हंसे और उसमें उन्होंने कहा कि चलिए यहाँ तो किसी और वजह से ख़राब है, लेकिन भारतीय संसद में जानकर हमारा जो है माइक बंद कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है, और ये ऐसा किया जाता है इसलिए क्योंकि हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँच सके। ये डेमोक्रेसी पर डेंट है। अब इस बात पर तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, उन रिएक्शंस को ज़रा सुन लेते हैं कि किस तरीके से चाहे बीजेपी की तरफ से, चाहे संघ की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन अब तक, क्योंकि ये बात जो है बहुत पुरानी है, वो बहुत समय से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को कहना ये बड़ी बात है। किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। डेप्यूटी स्पीकर हैं हरिवंश जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बेबुनियाद असत्य है। मैं बीते 9 वर्षों से संसद में हूं और लगातार हम देखते हैं वो कार्रवाई भी संभालते हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैंने किसी के मुख से नहीं सुनी है, ये हरिवंश जी का कहना है। लेकिन राहुल गांधी का जो कहना है माइक्रोफोन या माइक ऑफ करने वाली बात, ये आप इसको शब्द से या शाब्दिक रूप में नहीं समझिए, ये वो उसके मायने बता रहे हैं, है ना, कि हमारी बात को, जैसे कि अब उन्होंने जो भाषण दिया 7 फरवरी को, उसमें 50 मिनट से 36 मिनट हटा दिए गए, तो ये वो उस माइक ऑफ की बात कर रहे हैं कि आपकी बात को नहीं रखने दिया जा रहा है। किसी दिन माइक ऑफ कर दिया गया होगा, वो अलग बात होगी, हुआ होगा ऐसे उनके आरोप हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसके मायने वो कोई टेक्निकली नहीं लगा रहे हैं कि साहब माइक बंद कर दिया जा रहा है, बटन बंद कर दिया, ये चीज नहीं है। उनका कहना ये कि उनकी आवाज, लोकतंत्र में उनकी आवाज जो है वो आगे तक नहीं पहुंच रही है, वो आगे पहुंचाई नहीं दी जा रही है, यानी कि एम्पलीफाई करने से रोका जा रहा है। अब अगर उनके भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा, संसद के रिकॉर्ड से, मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया, तो इसमें वो वही बातें कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी बातों को रोका जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये माइक्रोफोन ऑफ करने वाली बात पर या माइक ऑफ करने वाली बात पर, संसद में जो माइक ऑफ कर दिया था, जो राहुल गांधी कहते हैं, इस पर हरिवंश जी ने पूरी बात जो कही है उसको जरा सुन लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर है कि विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का ऑडियो जो है जब वो संसद में बोलते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, कहाँ तक सच है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत
असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। हरिवंश जी को हम जानते हैं। हरिवंश जी जो है, हरिवंश नारायण सिंह जो है, वो राज्यसभा में डेप्यूटी स्पीकर हैं और उनका क्या खूब जो है जर्नलिस्टिक कैरियर रहा है। बहुत पुराने जो है जर्नलिस्ट रहे और उसके बाद वो नॉमिनेट होकर राज्यसभा पहुंचे और राज्यसभा में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बीते 9 वर्षों से मैं पार्लियामेंट में हूं और इस तरह की नितांत असत्य बात मैंने किसी और के मुख से नहीं सुनी है, ये उनका कहना है। लेकिन हाँ, इस बात को भी जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि वो माइक ऑफ करने वाली बात को सिर्फ माइक ऑफ करने तक नहीं रखते हैं राहुल गांधी, वो उसके मायने को कहते हैं कि बातों को आगे नहीं कहने दिया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को लेकर वो कही जाती है, वो उसके मायने। जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। तो ये शाब्दिक रूप से जो कहा वो उतनी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि उस इमेज को खत्म कर दिया जो बनाई गई थी। लगातार जो आरोप वो बीजेपी पर लगाते हैं कि हजारों करोड़ रुपया खर्च कर मेरी एक इमेज बनाई गई, मेरी इमेज को खराब किया गया, वो राहुल गांधी खत्म हो गया है क्योंकि लोगों ने सच देख लिया है। ऐसे में जो फोन ऑफ करने वाली बात है, वो एक आध दिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी दिन अगर हुआ हो तो वो अलग बात है, लेकिन वो उस बात को बड़े परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर वो बात है कि जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी इस बात का कई जगह जिक्र किया, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जिक्र किया। तो जल्दी जी जरा सुना दीजिए कि जो राहुल गांधी ने कई जगह इस बात का जिक्र किया कि हमारी बात को नहीं रखने दिया जाता, हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो जिक्र किया था कि नोटबंदी का जिक्र करो तो माइक ऑफ, और जीएसटी की बात करो तो माइक ऑफ, और तमाम और ऐसे मुद्दों पर बात करो जो जनता से जुड़े हुए हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ तो हम अपनी बात कर रहे हैं तो माइक ऑफ ऑन हमारे हाथ में है, लेकिन पार्लियामेंट में बीजेपी के हाथ में है कि हमारा माइक ऑफ रहे या ऑन रहे, यानी कि हमारी बात कही जाए या उसे रोक दिया जाए। ये बात वो लगातार आरोप के तौर पर बीते काफी वक्त से कहते रहे हैं और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर राहुल गांधी का ये कहना कि हमारी बात को रोक दिया जाता है, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, ये काफी बड़ी बात है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने और काफी बड़ी बातें कही हैं उनको हम लगातार सुना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से भी अब एक तरह से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बातें हैं आप विदेश में जाकर किस तरह से देश की छवि को खराब कर रहे हैं।
Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। आप भारत के साथ विश्वासघात मत करिए राहुल गांधी जी। That our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. विदेशी दोस्त हो, विदेशी एजेंसियां हो, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो बात कही गई अनुराग ठाकुर की तरफ से। वो कह रहे थे कि विदेशी धरती पर वो जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं, विदेशी मीडिया हो, विदेशी सरजमी हो या और दूसरी एजेंसीज जहाँ पर विदेशी जो है उनको स्पेस मिलता है तो वो तुरंत जो है भारत की बुराई करने में काम करते हैं। ये जो बात है वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें वो एक दायरे में मत रखिए उसको थोड़े से बड़े स्तर पर बात करिए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनके मूल्यों में सुधार व्यवस्था या कहें कि एक तरह से मजबूती की बात कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि अगर उस पर बात की जा सके, डिस्कशन किया जा सकता है, कमी भी बताई जा सकती है उनकी, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ से नकार देना, उसको ख़त्म कर देना, ये अजीब लगता है। लेकिन चूँकि ऑब्वियसली सत्ता पक्ष अपने हिसाब से ही चीज़ों को चुनाव करता है तो वो उसी तरह से कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद जो है चैथम हाउस में जाकर जो है अपनी बात को कह रहे हैं, उसमें साफ तौर पर वो उन बातों को कह रहे हैं जो वो यहाँ कह रहे थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कह रहे हैं या फिर अब यहाँ कह रहे हैं। ये एक बहुत आपको दिखेगा कि ऐसी बातें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी अपनी बातों को रोक नहीं रहे हैं, आपको अपने आप को पीछे नहीं हट रहे हैं, या फिर कहें कि अगर भारत जोड़ो यात्रा में इन बातों का जिक्र किया
तो उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ उसमें इसका जिक्र ना करें, वहां पर और दूसरी बातें करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहां भी वही बातें कह रहे हैं लेकिन उसको और पुख्ता तौर पर कह रहे हैं, उसमें चीज़ों को जोड़ रहे हैं, वैल्यू एडिट कर रहे हैं। अब ऐसे ही जो है वो अगर लंदन गए हैं, कैम्ब्रिज में भी गए हैं, तो वहां पर जिन बातों कह रहे हैं उसमें एक आध बात और जोड़कर कह रहे हैं, लेकिन पुरानी बातों को भी कह रहे हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो और तमाम बातें हो, ऐसे वो जिक्र करने से नहीं रुक रहे हैं जो जिक्र वो अक्सर करते आए हैं। अक्सर करते आए हैं का मतलब ये है कि जिनका जिक्र वो बीते कई वर्षों से कर रहे हैं। अब आप देखिए कि नोटबंदी जीएसटी की बात है, वो 2016-17 में इस बात को लेकर चले थे और अभी तक वो जीएसटी को लेकर जो है मोदी सरकार को कोसते हैं, नोटबंदी को लेकर वो मोदी सरकार को कोसते हैं। इसके साथ साथ माइक ऑफ करने वाली बात है उसको भी वो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हरिवंश नारायण सिंह जो डेप्यूटी स्पीकर हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वो भी इस बात पर बोल रहे हैं। लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी की बात को, वो जो उन्होंने माइक ऑफ करने वाली बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही, फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही और अब जो है हरिवंश नारायण जी ने उस पर जवाब दिया है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। ये है अग्निवीर, ये है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। कि विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेताओं का ऑडियो जो है जब वो संसद में बोलते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है, कहाँ तक सच है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बातों के संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, नथिंग कैन बी मोर फॉल्स देन दिस। मैं पिछले 9 वर्षों से संसद में हूं और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात किसी से आज तक न सुनने को मुझे मिली, न मेरी जानकारी में। भारतीय संसद लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप है। 1952 से जिन परंपराओं, जिन नियमों, जिन ट्रेडिशंस, जिन व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती रही है, आज भी उन्हीं के तहत चल रही है। तो इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है और जितना मैं जानता हूं किसी और ने भी संसद के अंदर और बाहर इस तरह की बात कम से कम मेरी जानकारी में नहीं कही। इसलिए जैसा मैंने कहा, नितांत असत्य, बेबुनियाद, आधारहीन, असत्य, गलत, इससे अप्रमाणित, अपुष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। ये बातें हैं जिस तरीके, ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब वो पार्लियामेंट में पहुंचे थे, इसके बाद चैथम हाउस में पहुंचे और वहां पर देखिए काफ़ी बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी तक 4 मंचों पर पहुंच चुके हैं ब्रिटेन में। पहले वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और सैम पित्रोदा उनके साथ लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कैम्ब्रिज में देखा उनको, चाहे IGA में देखा, लेकिन अब वो चौथे मंच पर भी पहुंचे हैं और जिस तरीके से उन्होंने RSS BJP को लेकर निशाना साधा है और काफ़ी मुखर अंदाज में। और एक बात और देखी गई है कि जिस तरीके से चारों जगह पर वो एक अलग अंदाज में नज़र आए और वो अंदाज जो है काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है। लेकिन कहाँ JP नड्डा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए दाढ़ी बढ़ाना जो है पुराना गेम हो गया, पुरानी ब्रांडिंग हो गई, इन सब से बचना चाहिए। लेकिन अब अलग तरीके से नज़र आए, जब वो कैम्ब्रिज पहुँचे तो उनका अंदाज़े बयां जो है अलग था। जो बात कह रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी दिखती है कि वो जो
वो बातें हैं जो भारत जोड़ो में भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने जो जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जिस तरह से उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये सब पुराना हो गया, ये ब्रांडिंग का जो हिस्सा है ये पुरानी ब्रांडिंग है, अब कुछ नया करना चाहिए। और जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा लेके जा रहे हैं उसमें तो भारत तोड़ो है। आपने देखा राहुल गांधी का नया लुक जो अभी वो कैम्ब्रिज में गए हैं? मैं हमेशा बात कहता हूं कि देखिए, ब्रांडिंग करना, अपने लुक्स के माध्यम से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना, ये चीजें अब ये गया जमाना हो गया है। आप जो ओरिजिनल हैं, आज देखिए सोशल मीडिया ये सब आपके इतने 650 स्लाइसेस कर देता है, 360 स्लाइसेस कर देता है। योर पर्सनैलिटी इज इन पब्लिक डोमेन। तो ये इस तरीके से कोई किसी को प्रभावित करना, ये ठीक है, लोगों में मार्केटिंग शब्द है तो है अब, लेकिन सही बात तो यह है कि पॉलिटिक्स अगर सेवा भाव से किया जा रहा है तो गरीबों का दिल तो मेहनत से ही जीता जाता है, ब्रांडिंग करके और लुक से नहीं जीता जाता। पर अभी जो उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसमें कई बड़े गंभीर बातें उन्होंने कही हैं, और वो बातें ना तो भारत को जोड़ती हैं, भारत को असल में तोड़ती ही हैं, भारत को बदनाम भी करती हैं। आपने भी उनके बयान देख लिए होंगे। वो कश्मीर को, मैं जो पुलवामा का अटैक था उसको आतंकवादी हमला मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर लगा रखा था। वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को नकली केसेस में फंसाया जा रहा है। ये सारी बात वो विदेश में जाकर और विदेशी कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले छात्रों और वहाँ के लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए, मैंने उनको कई बार कहा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सुबुद्धि आए। वो मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विरोध का स्तर क्या होना चाहिए और विरोध किन मुद्दों का होना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए थे क्या? आपने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न नहीं खड़े किए? आज पुलवामा पर आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, और कहां कर रहे हो? विदेश की धरती पर जाकर के कर रहे हो। ये राष्ट्रीयता का प्रमाण है क्या? फिर उसी तरीके से आप कश्मीर के बारे में आप जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से जब आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, किस अंदाज से और कितनी बड़ी संख्या में आपने वहां पर रैली करने की कोशिश की। उस बर्फ में आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन आप वहां पर उसको आतंकी से ग्रसित स्टेट को की इमेज आप देने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बयान देने से आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि आप देश का कितना नुकसान कर रहे हैं और देश विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते। ये कोई रंग है, न ये कोई ढंग है, और न ही इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। आप इस कोई विरोधाभास देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वो बात कर रहे थे कि हम भारत को जोड़ेंगे, और अब जो वो बयान दे रहे हैं, उसमें कोई विरोधाभास है या दे आर इन सिंक? जोड़ो या छोड़ो, भारत छोड़ो। आप देखिए, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये भारत को जोड़ कहां रहे हैं। मैंने उनका कंडक्ट आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दिया। मैंने उनका कंडक्ट भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तो इनके साथ दाएं बाएं घूमते रहे यात्रा के अंदर ऐसे लोग हैं। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी दी वो कातिल हो गया। प्रणब मुखर्जी जिसने फांसी को अपहेल्ड किया वो कातिल हो गए। ऐसे नारों के साथ जो अपने आप को जेएनयू में जाकर के राहुल गांधी ने जोड़ा, ये जब तक देश से माफी नहीं मांगेंगे, इनका भारत जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, ये तो तोड़ो। और जो लोग इनके साथ चले, आप देखिए, आप सारी यात्रा देख लीजिए, जो लोग देश के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, देश को कमजोर करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश को कमजोर वातावरण क्रिएट करने के लिए हमेशा साथ देते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के यात्रा में दाएं बाएं उनके साथ दिखे। तो ये जोड़ो यात्रा कहां थी? ये तो तोड़ो यात्रा थी। आपने सुना कि जिस तरीके से जेपी नड्डा अपनी बात को रख रहे थे, और उन्होंने एक तरह से देखिए, विरोध जो है वो पिछले 8-10 महीने से बना हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग जो है वो
राहुल गांधी करते दिख रहे हैं, क्योंकि 6 महीने जो है उनकी, 5 महीने अगर सही में लगाऊं तो भारत जोड़ो यात्रा रही, उसके बाद पार्लियामेंट में मौका मिल गया तो वहां पर उन्होंने गतिरोध जारी रखा, फिर अपना अधिवेशन हुआ तब भी बोले, और अभी ब्रिटेन जाकर वो 4 बार अलग अलग मंचों से अपनी बात कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है मौसमी सिंह जुड़ चुकी हैं, 1 बजे तो वो जुड़ेंगी आपके साथ खास तौर पर जुड़ेंगी। उनका शो सियासी मौसम आप खूब चाव से देखते हैं। मौसमी मैम आप हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले तो मैम हमने सबको शुभकामनाएं दी खूब सारी होली की, क्योंकि देश के कई हिस्सों में आज होली खेली जा रही है, कई जगह कल खेली जाएगी, तो हमने शुभकामनाएं जो हैं अपनी तरफ से दे दी हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि जो राजनीति में रंग घोले जा रहे हैं उन पर भी चर्चा कर ली जाए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम मंचों में इस बात को कहा है कि आरएसएस जो है वो फासिस्ट व्यवस्था है, वैचारिक रूप से मेरा उससे गतिरोध बना रहेगा, इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी को लेकर वो बातें बोल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अच्छे से तफसील से इस बात को बताएं। उन्होंने कहा कि ये बेतुकी बात है कि किस तरीके से बात कही दी जाती है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। 9 वर्ष पहले जो है हमारी सरकार थी, 10 साल चली, और इसको अगर बड़े और रूप में देखना है, बड़े संदर्भ में देखना है तो 75 वर्षों में 60 वर्ष कांग्रेस की या कांग्रेस के सहयोग से सरकारें चली हैं। तो ये बात बहुत अजीब लगती है। देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया था कि आपका रेलेवेंस कैसे बरकरार आप रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, अभी बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग फुट पर है। तो जो विदेशी पत्रकार थे उन्होंने जब ये सवाल किया तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कहा कि देखिए बीजेपी को इस बात का इल्म, हम सत्ता में है और हमारा पावर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, उन्होंने जवाब दिया। और ये सही नहीं है, क्योंकि पावर हमेशा नहीं रहता है। हमारी यूपीए की सरकार थी और उन्होंने बताया कि हम 10 साल तक यूपीए में थे, अभी वो लोग 9 साल से हैं, और इससे पहले भी हम लोग जो है कई दशकों तक सत्ता में थे। लेकिन हम लोग की अपनी खामियां रही। यूपीए 1 और 2 में जिस तरह से यूपीए चली, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है, जो बदलती भारत की तस्वीर है, उसमें हम लोग ने भापने में और उसका आकलन करने में कहीं ना कहीं गलती की। पर उन्होंने ये बोला कि सत्ता लगातार नहीं बरकरार रहती, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के पहले, क्योंकि ये सवाल ही उनसे 2024 के संदर्भ में पूछा गया था, तो 2024 के चुनाव के पहले राहुल गांधी का ये कहना, इस बात का आत्मविश्वास, उनका आत्मविश्वास झलकाता है इस बात पर कि कांग्रेस कि अभी बुलंद चांसेस हैं 2024 से पहले सत्ता वापसी की। और राहुल गांधी को कम से कम इस जवाब से उनके लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का जो कार्यकाल है वो हमेशा के लिए चलेगा। अब ये अपने आप में ये बात इसके मायने बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक धारणा बनाई जा रही है या एक सेंटिमेंट है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना तय है और 2029 की अब बात विपक्ष करे। इस बैकग्राउंड में राहुल गांधी का ये कहना अपने आप में इसके सियासी मायने काफी बढ़ जाते हैं अविचल। हाँ, आपने होली का जिक्र किया, होली का मौसम है और तमाम दर्शकों को आपके बहुत बहुत न्यूज तक के बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के मौसम में और होली के त्योहार के उपलक्ष्य पर भी सियासत जो है वो अपने चरम पर है। जी, सियासत चरम पर है। मैं 2-1 सवाल में चीज़ों को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि उसका कारण भी यही है, क्योंकि अब 1 बजे हम आएंगे तो और इस बात पर जिक्र करेंगे। लेकिन 4 मंच हुए, जिसमें कैम्ब्रिज है, या फिर हम आईजीए की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बात करें, या फिर चैथम हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वहां पर टेक्निकल ग्लिच था। अच्छा, एक कारण भी हुआ कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका माइक्रोफोन कुछ खराब हुआ, तो वो हंसकर बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है, भारत में तो हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अरे, अब हरिवंश नारायण सिंह जी जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि 9 साल में इस बात को मैं मान ही नहीं सकता, ये नितांत असत्य बात है कि ऐसा किसी ने कहा हो, ये तो मैं उन्हीं के मुख से सुन रहा हूं। लेकिन हाँ, हमें इसको ऐसा भी समझना चाहिए कि हरिवंश नारायण जी ने जो बात कही है वो शायद शाब्दिक रूप में कही है, लेकिन राहुल गांधी इसके मायने कुछ और बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जीएसटी पर बात करते हैं तो माइक ऑफ, नोटबंदी पर बात करते हैं तो माइक ऑफ, अडानी पर बात करते हैं तो माइक ऑफ। शायद वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हमारी बात को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, एम्पलीफाई नहीं करने दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, स्पेस नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती है।
देखिए अविचल, अगर आप संसद की कार्यवाही देखें तो अक्सर आप देखेंगे, और ये आरोप विपक्ष बार बार लगाता है, हम लोग भी जब मॉनिटर करते हैं स्क्रीन, अगर हम हाउस के अंदर नहीं है, क्योंकि बतौर पत्रकार आपकी मीडिया गैलरी होती है, आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं, पर जो सीधा प्रसारण होता है उसमें आप देखिए तो ज्यादा से ज्यादा आजकल ट्रेजरी बेंचेस को दिखाया जाता है। अगर हंगामा हो रहा हो या आप संसद में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो लोअर हाउस है या अपर हाउस है, आप देखेंगे कैमरे का फ्रेम फिक्स्ड होता है मंत्रियों पर, या जहां पे जो स्पीच दे रहा है, अगर कुछ गतिरोध भी हो या कोई उठ के खड़ा है तो विपक्ष के नेताओं की झलक बहुत कम ऑन एयर टाइम अगर आप देखें तो ट्रेजरी बेंचेस की ज्यादा नजर आती है, और विपक्ष के नेताओं को कम दिखाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कंपेयर कर लें टाइमलाइन, मैंने देखा है खुद, कई बार हम लोग को लगता है अरे टीवी स्क्रीन से नहीं पता चलेगा, किसी को मीडिया गैलरी में जाना होगा, हमें मीडिया गैलरी में, क्योंकि यहाँ फोन लेना अलाउड नहीं है, तो हम लोग खुद मीडिया गैलरी में जाके बैठते हैं कि असल में देखें क्या हो रहा है। क्योंकि टीवी पे जितने 3600 कैमरे लगे हैं लोकसभा में, तो टीवी वो जो ऑन एयर कटता है वो एक फ्रेम कटता है, वो शायद ट्रेजरी बेंचेस या स्पीकर का ज्यादा होता है। तो इसमें कोई, तो राहुल गांधी एक तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग को दिखाया नहीं जाता कि विपक्ष ने क्या हंगामा किया है, और हंगामा करने से पहले कई बार हाउस एडजर्न कर दिया जाता है, खासतौर से ये राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष की संख्या ज्यादा है, हंगामा होता है तो शोर ज्यादा होता है, इसलिए वो एडजर्न हो जाता है। लोकसभा में विपक्ष लगातार नारेबाजी भी कर रहा है तो चलता रहता है, क्योंकि उनकी संख्या कम है, शोर कम होता है और कार्रवाई उसी हंगामे के बीच चलती रहती है। दूसरा, उन्होंने बोला माइक ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको मौका नहीं मिला, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है या कोई नोटिस दिया है तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और माइक ऑफ मतलब जब वो बोल रहे होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अभी ये टॉपिक नहीं है, तो ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। तो जब स्पीकर ये बोल देंगे कि ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, तो माइक जो है ऑन ऑफ होता है वहां पे, हर एक मेंबर के पास माइक होता है। तो कोई स्पीकर अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा है तो उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है, मतलब पावर ऑफ कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी बार बार वो बोल रहे हैं कि कई बार हम अपनी बात, अगर आपके पास माइक नहीं होगा तो आपकी आवाज तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, एक तो आपके ऊपर कैमरा भी नहीं है, तो कोई भी, ये हो सकता है, ये सही गलत है हमें नहीं मालूम, पर इस सदन की कार्रवाई को चलाने का जो तरीका उभरा है उस पर राहुल गांधी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि भाई वो उसके अलावा हमें एक्सपंज कर दिया जाता है हमारे बयानों को। आपको याद है एक गाइडलाइन आई थी पिछले सत्र में कि क्या क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है, क्या क्या नहीं है, और उसमें कई सैकड़ों शब्द थे, ब्लैक मनी, काले कानून जैसे शब्द भी, कानून जैसा शब्द भी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो ये सब चीजों को विपक्ष के नेता लगातार उठा रहे। जी मौसम मैम, सवाल मैं आपसे करूंगा, उसमें यही कहूंगा कि जैसे कल जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे, अपनी बात कही, उसके बाद चूंकि उन्होंने अपनी जो बात कही थी वो लेबर पार्टी, जो अपोजिशन में इस वक्त पार्टी है ब्रिटिश में, वहां पर जो लेबर पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी इन्वाइटी पर वो गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ अपनी बात कही, उसके बाद चैथम हाउस में गए। चैथम हाउस में एक महिला ने उनसे सवाल किया, और उनसे सवाल इस बात को लेकर किया कि मेरे फादर साहब जो है वो आरएसएस के लिए काम करते थे, तो आपके जो आरोप है कई बार वो डाइसी लगते हैं। इस पर उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जो चीजें कही, उन्होंने कहा कि मुझे ही लगता है कि आरएसएस एक तरह से फासिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाता है और बीजेपी उसका हिस्सा है। मैं एक चीज देखता हूं कि कई बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र खुले मंचों से आराम से हर जगह करते हैं। ये कई बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान में महाराष्ट्र में वो सावरकर का जिक्र करते हैं, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहते हैं कि इससे हमें नुकसान होता है। लेकिन इसमें एक नजर ये बात आती है कि राहुल गांधी अपने मुद्दों को लेकर अड़ियल, मैं उसको अच्छे सेंस में कह रहा हूं, इसको रिजिडिटी में आप देख सकते हैं, वो अपने मुद्दों को लेकर पक्के हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम वैचारिक रूप से परिवर्तन कर लेंगे तो बढ़िया है, ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस पर ज्यादा काम करें, नंबर गेम तो बाद में आते रहेंगे। लेकिन ये लगता नहीं है कि नंबर गेम बाद में आते रहेंगे ऐसा सही भी है, क्योंकि आपको अगर बदलाव भी करना है तो सत्ता जरूरी है। देखिए, उसके पीछे एक धारणा है कि अगर आप आरएसएस पर प्रहार करते हैं, आरएसएस का इतना जबरदस्त नेटवर्क है, तो सीधे आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्रिय हो जाता है कांग्रेस की खिलाफत करने में।
क्योंकि आप निजी प्रहार आरएसएस पर कर रहे हैं, तो एक धड़ा मानता है कि आरएसएस पॉलिटिकल जो पार्टी है उस पर प्रहार करना चाहिए, आरएसएस पर नहीं करना चाहिए। पर राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि वो लगातार आरएसएस पर इसलिए प्रहार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की विचारधारा को अगर भारत में रेलेवेंट रखना है, कांग्रेस की जो पार्टी को अगर रेलेवेंट रखना है, तो ये विचारधारा है। एक संगठन ऐसा है जो दिन रात काम करता है, वो किसी के मरने पर, किसी के पैदा होने पर, खुशी पर, उनके लोग जो है गांव गांव जाते हैं, एक पारिवारिक संबंध है, कोरोना से लेके तमाम मुद्दों पर मदद करते हैं, वो है आरएसएस। तो वो एक तरफ तो सोशल सर्विस भी करता है और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है वो उसका प्रचार करता है, जिसका कनेक्शन बीजेपी से। तो राहुल गांधी को लगता है कि ये लड़ाई बिना आरएसएस को जो है टेक ऑन करने के बगैर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और इसमें वो कॉम्प्रोमाइज कतई करना नहीं चाहते। आप महाराष्ट्र का उनका बयान ले लीजिए, या इंग्लैंड में अभी उन्होंने बोल दिया कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसी की तरह आरएसएस है, जो चाहती है कि वो लोकतंत्र में सत्ता में आए और उसके बाद सत्ता पर कब्जा कर लेती है। तो बिल्कुल राहुल गांधी की लाइन क्लियर है। अब वो सक्सेसफुल रहते हैं या फेल होते हैं आरएसएस पर अटैक करके पॉलिटिकली, ये तो 2024 के चुनाव बताएंगे। अभी तक उनको नुकसान ही इसका उठाना पड़ा है। और राहुल गांधी लाइक तमाम लोग कहते हैं इज ऑल अबाउट द लॉन्ग रन। वो लंबी रेस के घोड़े हैं, ऐसा लगता है कि वो एक लंबी रेस दौड़ रहे हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। मैंने 2012 में उनसे पूछा था, तो उन्होंने उनके कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला मैंने अभी कभी सोचा नहीं। तो राहुल गांधी को कोई जल्दबाजी नहीं है प्रधानमंत्री की रेस में कि वो 24 में रेस में रहे, वो 29 में भी रेस में रहने के लिए तैयार है, या शायद 29 या उसके आगे की लड़ाई लड़े। बट ये याद रखना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। ये भी एक बहुत फेमस सेइंग है। राहुल गांधी को चूज करना पड़ेगा उनका रास्ता क्या है। बात कह रही हैं आप कि 2023 में भी जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कह देते हैं कि ये सब बातें जो है आगे की हैं, इनको पीछे छोड़ देना चाहिए। आप 1.5 घंटे बाद अपने दर्शकों से जुड़ेंगी, हमारे साथ जुड़ेंगी, उसको हम इंतज़ार में रखते हैं। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की इस बात को मैं सुनाना चाहता हूँ कि आरएसएस को लेकर क्या क्या कहा है राहुल गांधी ने, वो ज़रा सुना दीजिए। States, I think 146 days. You only finished in January. So why didn't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you. Thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was, I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country.
the press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बात को रख रहे हैं उसमें वो ऑल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं कि ऑल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अंडर में हैं या डर में हैं या उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, जबकि वो संवैधानिक या ऑटोनोमस बॉडीज़ हो सकते हैं। इस बात के आरोप जो हैं वो अब बहुत सामान्य हो गए, लेकिन चूंकि ऐसा दिख रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, इसलिए विपक्ष इसको लगातार बढ़ाए चल रहा है। लेकिन इसमें जनमानस के जो मुद्दे हैं वो छोटे हो जाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, इन सबको चाहिए कि ज़रूरी इस बात को पक्का करें कि जनमानस के मुद्दों को ज़्यादा बड़ा करते रहें। हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी जब लोगों के इश्यूज़ को उठा रहे थे तब जो है भीड़ जो है ज़्यादा आ रही थी। और अभी भी हाथ से हाथ जोड़ो में जब हम रेवंत रेड्डी को देखते हैं जो तेलंगाना में इस मुद्दे को बड़ा कर रहे हैं या तेज़ी से उठा रहे हैं और साथ में ले रहे हैं कांग्रेस के काडर को, तो काफ़ी भीड़ हो रही है। उनको छोटा राहुल गांधी कह रहे हैं, तेलंगाना का राहुल गांधी कह रहे हैं, और वाकई जो है उनके साथ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने विचार को, अपनी बात को दूर तलक पहुंचाने के लिए काम करे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो बड़े मंचों से तो बात कह रहे हैं, चाहे वो ब्रितानी स्पेस से जाकर अपनी बात को कह रहे हैं, और उस ब्रितानी हुकूमत जो भारत में रही और उसके बाद वो आज वहीं पर जाकर इस बात को कह रहे हैं 75 साल बाद कि अगर भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होता है तो सभी के लोकतंत्र पर खतरा है। ये बड़ी बात है कि जिस हुकूमत से हम आज़ाद हुए उन्हीं के ज़मीन पर जाकर इस बात को कह देना कि अगर हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हुआ तो वो सभी के लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे में इस बात को बहुत लोकतांत्रिक तरीके से ही देखना चाहिए। पहली बात तो कि किसी व्यक्ति को इस बात को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, वो कहीं भी कहे इस बात को और दम से कहे और उस तरीके से कहे जिस तरीके से वो कहना चाहता है। ऐसे में राहुल गांधी कम से कम ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस करने से क्या वो दमदारी हासिल हो जाएगी जो कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस को 2024 के चुनावों में अपने आप को मजबूत करना है, तो क्या ये संभव हो पाएगा, या फिर कर्नाटक के चुनाव से लेकर 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में क्या उसको सत्ता मिल पाएगी। वो सत्ता जो 2018 में उन्होंने हासिल की थी, जिसमें से 2 स्टेट की सत्ता चली गई, 2 में बाकी है, तो ये क्या वो रिपीट कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों तक उनको जोड़ा जाए, झकझोरा जाए कि साहब कांग्रेस अभी है। क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि कांग्रेस को इस बात में सोचना कि कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत, ये सब बेतुकी बातें हैं। इनको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। 75 में से 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है, कांग्रेस के सहयोग से सरकारें चली हैं, और 9 साल पहले भी 10 साल कांग्रेस की ही सरकार थी। उस बात को उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से कहा कि जिस तरीके से बड़े आम चलन में कह दिया जाता है कि कांग्रेस जो है ख़त्म हो रही है, कांग्रेस की चीज़ें जो है कमज़ोर हो रही हैं, आरएसएस, बीजेपी इस बात को एम्पलीफाई करता है, तो ये बात जो है बेईमानी लगती है। दरअसल चैथम हाउस में जो उन्होंने कहा है, चाहे वो उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर कहा, चाहे वो आरएसएस को लेकर कहा, बीजेपी को लेकर कहा, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर कहा, ये सब बातें आपको सुननी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इस समय वो सुनी जा रही हैं, इस पर बातचीत की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि चैथम हाउस जो ब्रिटेन में उन्होंने अपनी बात को रखा है और जो इस समय इंटरेक्टिव है, क्योंकि उसमें कई सारे लोगों ने सवाल भी किए, उसके जवाब दिए राहुल गांधी ने, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, उनको ज़रा सुनिए। Nation on earth. That is one of the things prompting those comments. But so is its leadership of the G20 this year and the many difficult, tactical, diplomatic questions it has in steering its way through that and the membership of the G20. And at home, as we know and as we're about to hear, there are many questions as well, from climate change and food insecurity to intercommunal divisions and inequality. Rahul Gandhi needs very little introduction. He comes from one of India's preeminent political families. He's been a member of parliament since 2004,
He was the president of the Indian National Congress, the main opposition party, from 2017 to 2019. He comes to the UK having recently completed a 4,000-kilometre walk across India to listen to the concerns of voters in the world's biggest democracy. Very glad to have you here today. Thank you. Thank you. Thanks, Bronwyn, and thanks, Mr. Gandhi, for joining us today, and thank you all for arriving so promptly. Just a reminder before we get going that we are in Chatham House, but this event is on the record. It's not being held under the Chatham House rule, and it is being live streamed as well. If you're watching on Zoom and you want to ask a question, please put it in the Q&A box, and I will save plenty of time in the room as well to take your questions later on. But for now, let's just get straight on with the Q&A, Mr. Gandhi, and maybe we can start with your walk across India. I think it was called the Bharat Jodo Yatra, right? Is that the Unite India March? Or is that the correct translation? You walked 4,000 kilometers through 14 states, I think 146 days. You only finished in January. So why didn't you start by telling us why you did this walk and what you learned? Well, thank you. Thank you for having me here. It's an honor for me to be here. Thank you for coming. When I joined politics, 2004, the democratic contest in India used to be between political parties. And I had never imagined at that time that the nature of the contest would change completely. It was. I mean, if you had even told me at that time, I would have said that it was a ridiculous thing to say. But the nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament, right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey. But it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun experience, painful at times, but we all learned a lot. And it placed on the table
a different narrative of India, right? Not an angry, aggressive, violent narrative, which is currently deployed by the BJP, but a peace-loving, almost Gandhian, non-violent, open, accepting narrative. And I think that was the biggest success of the Yatra, that it clearly placed on the table a different vision of the country. And what did you learn while you were sort of traversing, the many diverse states of India, mobbed by people at different stages along the way? We learned many, many things. Well, the first thing I learned was that listening, especially listening to people, large numbers of people, is something very powerful. And I realized that as a politician, before my walk, I was not actually listening properly, right? As politicians, we start by telling you what we think. And we have a narrative in our mind, and whenever somebody says something, that narrative is shaping our conversation. Maybe we want to impress a little bit and say we understand, what you're trying to get at. So that instinct went silent. It went silent because, frankly, I had no choice. One, I had a knee problem, so my mind was like trying to calm my knee down. And second, the number of people was so big that it was no point. So after some time, I just went silent and I started to listen properly. And it was a very powerful experience for me. Taught me patience. And there was huge pressure. I mean, to give you an idea, 6 people died in the walk. Many people broke their legs, arms, because there's huge pressure of people. There were thousands, at times 50, 100,000 people walking. So it was a physical experience. The other thing I learned is that no amount of exercise makes you lose weight. It's like completely a myth. I mean, at the end of this thing, 4,000 kilometers, I go on the scale and I put on a kilo. I mean, so I'm like, okay. So it's totally diet. It's nothing to do with exercise. That's the other thing I learned. Yeah. And how has the walk been received politically? I mean, obviously, you did it for the reasons you said, but you're also a politician. You're seeking to win public support. There are national elections coming up in India. What's your sense in terms of how it's been received in terms of your own political position and Congress's position in India? It's transformational. It's transformational, certainly for the party, because it gave tremendous energy to our party workers, but it was also transformational for a lot of the people who are coming. And the powerful thing about it was the physical contact and the scale of the physical contact. And it was something, I've been to thousands of meetings, public meetings, conversations like this. It's a completely different thing, because when you're walking, and you're walking with, say, a farmer, or you're walking with a young woman, there's a struggle going on. Particularly if you're walking 25, 30 kilometers a day, there's a struggle going on, and you sort of are jointly going through that thing, right? So it's a completely different conversation that happens. The other thing I did, which I think helped a lot, was right in the beginning, I got the guys I work with and I said, look, what is my responsibility here? What is mine and your responsibility here? We are walking 4,000 kilometers, and that's all fine. But what is it that we will not accept in this walk? And I told them that, look, what I want, and there was a rope there. So I don't know if you saw, did you see the video? You didn't see the video? Yeah, I've seen it. Yeah, so there's a rope there, and there's quite a lot of security around the rope. So I told the guys that, look, whoever comes into this
area to talk to us. And there were 125 of us walking, so it wasn't just me. I was in front, but there was 125, and these conversations were going on with everybody. And I said, look, whoever comes in, he doesn't matter who he is, who she is, that person's got to feel at home, right? And the feeling I want us to generate is that when they leave this place, they feel that they've left home. So in my mind, it was not a political exercise. In my mind, it was a personal exercise where I was welcoming people like into this room and giving them a space to feel comfortable and talk, and also making it a personal talk, not a political talk. And we were successful at doing that because there was a lot of pressure, security people pushing and pulling. And so we created this sort of cocoon there where anybody came in, felt comfortable. And then some magic started to happen. Because the moment they started to see this, that there's this connection in the 21st century where, we're not going through the WhatsApp or we're not going through Facebook and all that. And there's this gentleman who's come here and these people who've come here and they're talking to us. Then the nature of the conversation changed completely. And most shocking conversations started to happen. Like the most personal things suddenly people were discussing with a stranger, really. So it became almost like either a friend or a brother, that was the type of conversation. So a lot of stuff came out. You've talked a lot previously about the attacks on democracy in India, at a time when I guess there's a sense that globally democracy is under pressure. I mean, do you see any linkages there? Do you think there is some sort of global shift against democracy that's affecting or partly driving what's been happening in India? Or do you see the challenges in India as being pretty endogenous to India's particular political environment? They're linked for sure, but each country has its own history, its own philosophy, its own way of thinking about these things. So definitely there are two sort of visions of the planet emerging. I mean, that to me is clear. There's a sort of free, democratic, open space idea, and then there's a sort of more controlled, coercive idea, and that is visible. There are some nuances to it in India, right? First of all, it's not a battle between political parties anymore. It's a battle between two old ideas of India and philosophical ideas of India, which are diametrically opposed, different. And the BJP represents one and we represent the other. In India also there's the matter of caste, right, which doesn't exist, for example, in England or the United States. It's a very particular aspect of society. So it plays out differently, but it's sort of informed by what's going on in the rest of the world. And I mean, obviously, you're a politician. You've pinned a lot of the blame for what's happening on BJP and Narendra Modi's government. But are there bottom-up drivers, do you think, in India as well? I don't. It's not that I pin the blame on them. It's that I feel they operationalize it, right? So they are the mechanism through which it's happening. But I said in my Cambridge talk that I think the problem. Well, when we walked, we heard basically three things. Well, four things. Unemployment, price rise, inequality, and violence against women. Those are the broad themes that came out. But the real problem is the unemployment problem, right? And that's generating a lot of anger and a lot of fear. And I think the unemployment problem is happening because earlier, if you look at the 50s, 60s, 70s, 80s, there was a concept of production in the democratic environment, right? Countries like Britain, countries like India, America, they produced things, and there was manufacturing, there was production going on. And then for whatever reason,
that was parceled out to China, right? And today we live in a world where there is a production model in the coercive environment, but there is no production model in the democratic environment. So the result is that it becomes very difficult for democratic countries to give their youngsters employment. I don't believe that a country like India can employ all its people with services. I just don't believe it. It doesn't work, right? It doesn't have the connectivity, it doesn't have the structure that can deliver you those jobs. So to me the question is, can a democratic production model be rebuilt, and what does it look like, right? And I think that's at the center of what is creating the problem. And the problem is manifesting in different places differently. In India, it's manifesting along caste lines, along religious lines. I think we might come back to that economic question later if we have time on economic models. But obviously, the BJP would say to you that you're looking for excuses for why Congress hasn't been able to cut through. So you blame the playing field being unfair. And I guess there's certainly a point there that Congress and its coalition partners have struggled to cut through, given what you're saying about the scale of the problems that people are facing. So why do you think that's been, that you've struggled on the national stage to get that cut through? And how do you think you might be able to change that, leading up to the next national elections? To put it in perspective, right? If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not, I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally, that's not the case, right? But there is a set of changes that are taking place in India, and the Congress party and the UPA in its time were caught by those changes, right? The biggest change is that India is moving from a rural country to an urban country, right? And that changes the nature of the political discourse. That changes the nature of the structure. And we were focusing a lot on the rural space, and we missed the ball in the beginning on the urban space. And that's a fact, right? So those things are there. But to say that now the BJP is in power and the Congress is gone, I mean that's actually a ridiculous idea. And as far as the coercion, the violence that is concerned, it's not the Congress that's saying it. Congress is saying it, but you just got to travel in India and see it. I mean, you can see what's being done to the Dalit community, or you can see what's being done to the tribal community. You can see what's being done to the minorities. It's not that the Congress is saying it and objectively it's not being seen. There are articles all across in the foreign press all the time that there is a serious problem with Indian democracy, right? It's also the way the BJP responds, right? It's not interested in a conversation. They've decided that they know what's going on. Nobody else in the country understands what's going on. And that's it. And this is visible. I mean, you can ask any opposition party. You can see, for example, how the agencies are used. You can ask any opposition leader about how the agencies are used. My phone had Pegasus on it. That simply was not happening when we were in power. So there are things that are very obvious and are apparent to everybody. And when we go beyond the next election or the election after that and think a bit bigger about India's future, I think you described India really nicely as sort of ongoing negotiation between different states and peoples. And obviously the intercommunal tensions are not a new phenomenon in India, but how does India move beyond that to a better, more peaceful, smoother kind of negotiation in the next decades? Yeah, so, I mean, one way of looking at India is that it's a country. And another way of looking at it is that it is a negotiation between 1.4 billion people,
right? And that negotiation, if you imagine India, in terms of numbers, it's probably 3 times Europe, 3 times the United States. It's probably got as many languages as Europe does. It's certainly got as many histories as Europe does. And that negotiation is a complex negotiation. And that negotiation happens, it doesn't happen out in the streets. It happens through institutions. It happens through the parliament, it happens through assemblies, it happens through the courts, it happens through the election commission, right? And my worry is that the architecture of that negotiation is being attacked and broken, right? And you can see sort of the symptoms, right? The Prime Minister one day turns around and demonetizes the entire currency, right? The Reserve Bank doesn't know about it. And everything has been bypassed on something as fundamental as the currency of the country. That's an example. And it's the same way the GST was worked out, right? So you can see that the reliance on those institutions is reducing. And that to me is very, very dangerous, right? So certainly there's repair work that needs to be done, right? On the idea of freedom, on the idea of independent institutions, there's a whole bunch of repair work that needs to be done. And then I think fundamental to a successful India is the decentralization of power. So what is happening, what you see, the trend you see is massive concentration of wealth and power, right? And that, if you really look at the BJP and see what's the one big thing that they've done, it's huge concentration of power in the Prime Minister's office, and then huge concentration of wealth in the hands of 2 or 3 people, right? And that, to me, a country the size of India simply cannot be run like that, right? So that, to me, the decentralization, supporting small and medium businesses, starting or reimagining production, manufacturing in a modern way, in a decentralized way, in a technological way. And I think their linkages between the West and India are critical. I want to pivot a bit here to foreign policy and start with India and China. And I know you're a keen follower of China, and obviously in the last few years we've seen these flare-ups at the border seemingly driven by China. There was a trajectory previously where Xi Jinping and Modi seemed to be getting on well. They had their sort of tea meeting in Wuhan. Why do you think in the last few years Beijing has decided to antagonize India? Because it seems to have really pushed India towards the West. Antagonize is sort of a benign word. I mean, they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory, right? I mean, I don't know, that antagonize doesn't quite capture it, right? No? I mean, yeah, it doesn't quite capture it. And the interesting thing is that when they did it, our Prime Minister said, in a meeting with the opposition where I was there, that not a single inch of Indian territory has been taken, right? Now, what message does that send to the Chinese, right? The Chinese know they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory. Our military knows it. And our Prime Minister says, well, they're not there. So it encourages them, right? So that's one aspect of the problem. As a country, our ethos and our DNA is democratic, right? I mean, there's the book, The Argumentative Indian, by Mr. Amartya Sen. We just like to talk and, spend a lot of time talking and discussing things. And that's the way we build consensus, because it's very complex. And so we in the Congress are pretty clear that whatever is going to be built, whatever is going to happen, has to be in a democratic, in an open structure. And that, of course, that's not China, right? So we are much more comfortable with the democratic idea, that open idea. Of course, at the same time, they're our neighbor, and we are in competition with them. And frankly,
if we're going to talk about production, right, we are the biggest game in town. And so they see us as a problem, right? So my approach is, they are offering a vision of productivity, of prosperity. Well, we should have a vision of prosperity too. And that includes the West and India. But that's missing, right? So to me, that's where the work needs to be done. It seems to me that as someone who's lived a long time in Asia and watched the politics play out, it's going to be very hard to have a successful, productive Asian century if India and China are at loggerheads. So how can you foresee a rapprochement between India and China, and how might that happen? How could that happen? I mean, I don't know about rapprochement, but I do think that we have to have a vision for production, right? And I don't think it's going to look like the Chinese one. It can't. Structurally, we can't do that, right? So it's got to be a decentralized one. And I think you are going to have a level of competition between the two countries. There is going to be, on the margins, there's going to be a little bit of tension, a little bit of hostility, but I think it's very important that the lines are clear. I mean, they're sitting on 2,000 square kilometers of our territory, right? That's the fact. So what would a Congress government do about that? Well, I mean, we'll have to see when we're there in power, but I think making things clear, and certainly not denying that they're sitting in your territory to start with. And so you spoke earlier about sort of different visions of the world, and I guess a US-led vision you're implying, and maybe a China-led one. But what would an India-led world look like? Is it very similar to the sort of Western democratic ideals? Is it something very different? I don't quite like the word led, right? I think it's a joint effort, right? And I think there are components that the United States has, there are components that Britain has, there are components that India has, and they're valuable, right? So I think I don't like the idea that that's being led by that person, this is being led by that person. I like the idea of a bridge. So how can we imagine a bridge of prosperity between these systems and these ideas, where we have a role to play, we bring a lot to the table, you bring a lot to the table, right? And let's have a conversation about what those things are and how we can put it into practice, right? I think the world is, in the 21st century, is connected enough where the word led is problematic. So is it then that you're envisioning some more sort of more multipolar order where? No, of course, the United States is more powerful, right? So one cannot deny that the United States is powerful, but everybody is required. You can't in the 21st century say we're going to exclude you. That's not a possibility. So now, what would the Indian elements of that bridge look like? A successful, in my view, it would invoke the ideas of Mahatma Gandhi. It would be non-violent. It would be sensitive. It would stand for some of those values, which India is very good at doing. It would respect other cultures. It would not be aggressive. It would try to listen to other perspectives. We're good at doing that. I mean, we have in our philosophical structure, we have these ideas. We have this idea called shunyata, right? Zero, non-existence. So that can absorb everything. So those are the type of ideas that I would say that India brings to the table.
And I want to ask about Ukraine, because it's obviously a massive issue in Europe. I think by and large Congress has supported, if I'm right in this, the Modi government's position of neutrality at the UN when it comes to the war in Ukraine. I mean, how do you think that stands with India's position as a democracy and wanting to provide democratic leadership and upholding, the ideals of freedom and sovereignty? I mean, I would agree with the foreign policy on that issue, and there's also an element of national interest. There are interests. We have to look after our interests. So they're there. But I'm against any type of war. I'm against any type of violence, and the sooner it ends, the better it is. And as far as the 21st century is concerned, a war like Ukraine, with the potential for unlimited escalation, is just downright dangerous. And we should be very careful that it's playing out in Europe. And everybody should try and do their bit to stop it. And could you see a time when India does start to move away from Russia? Obviously, that's one of the reasons why India is wary of criticizing Russia, because it relies on Russia for a large part of its military equipment and technology. But obviously, at the same time, the West has been courting India in part because of the issues that you have with China, and we see the existential threat from China. So could you foresee this shift happening over time? I mean, look, self-interest is important, and then you're saying courting. I don't know how well are you courting. Well, it depends. That's up to you. How well you court India. Yeah. So. And could you ever envisage an India that does move away from multi-alignment or non-alignment to kind of hard alliances? I don't know. I don't think about it like that. I think what is it that we're trying to achieve? Right? Start from there. What is our problem? Our problem is we've got a huge population, and we need to give them jobs. We need to give them livelihood. We need to give them an imagination. And that's our primary job. Now, we will do whatever it takes to make that happen. And the best route to make it happen is what we'll be doing. We're not going to do anything that will damage the aspirations of our own people. We're not going to do something that is going to, damage their employment prospects. So every country looks at itself, looks at the problems it's trying to solve, and then works from there. Right? I'm going to come to audience questions in a minute, just a couple more. I mean, firstly, on the economy, I mean, it seems to me that the model of industrialization and manufacturing, export-led growth that was very successful for Japan, Korea, Singapore in driving them to rich country status doesn't really work anymore because of changes in the rise of automation, potentially because of the fracturing of global value chains and some sort of shaving away of the benefits of globalization. So for India as well, which is such a big country, such a big domestic market and big challenges to employ its young people as well, what is the model do you see going forward for India to achieve the sort of rapid growth but also more equitable growth that your country needs? In my walk, I walked past a town called Bellary in Karnataka, and I literally walked past it. And some people over there said, "Look, this is a jeans producing center. Okay, and please come and see what we're doing." So I spent half a day walking around Bellary and looking at this jeans production that they were doing. It used to employ 5 lakh people. So 5 lakh is 500,000, right? Today it employs 40,000 people. Right? It's essentially a network of skill, right? Whenever you walk in there are people who have huge amount of skill sitting there, and they're doing nothing, right? And then make that accessible to people, right? And those centers exist all across India. There's Bellary, Moradabad, everywhere. Almost every district in India has
a skill base that is profound, right? But then what do we do? Or what is happening today? Huge concentration of wealth, huge concentration, complete control of the banking system by 3 or 4 large industrialists, and the skills just lying there wasting away. Those 4.5 lakh people today are unemployed, right? That Bellary itself, if it's aligned properly, if the banking system is made accessible to them, if you inject technology into that skill space, that thing, you'll be able to produce 1 million jobs there, right? So I don't agree that manufacturing per se is dead, right? I look at it by saying, okay, here is the skill. What do we need now to make sure that this skill translates into jobs, right? And then there are different areas. I'm not saying that there is no space for large business. Absolutely there is space for large business. But the level of monopolization that is taking place today is seriously problematic. It's problematic if you want to transform, if you want to give Indian people jobs. It's problematic if you want to have a productive vision for the country, right? So also, there's a huge scope for agriculture, right? Building a cold chain, modernizing the agricultural system. It's huge potential. It's wasted right now. So those are the type of things that one would look at. Last question I have before I go to questions from the floor and online. You talked a lot on this trip and probably before as well about listening, and I agree with you, listening is an underrated quality in politics and diplomacy where most people prefer talking. So given we've got you here and we're all keen to listen, and you've been in the UK I think for a week or so now, what do you think we in the UK get most wrong about India? What don't we see that we should know to better understand India? Now, I'm going to give away the secret. No, it's like the quote I saw in your room, right? The Gorbachev quote. The Gorbachev quote was to the effect of, we are at a very important time in history, and there are 2 options. One option is this one, and the other option is this one. That's just not how the Indian mind sees the world, right? The Indian mind just does not see the world in a binary way. So for the Indian person, number one, we are not at a critical point in history, right? And number 2, there's thousands of options standing right in front of us, right? That's just how the Indian mind works. And it translates, if you just go to Delhi and you look at the street and you look at the lanes, you'll see Indian drivers making their way through this thing, right? They'll go this way, they'll go that way. Now, that looks like chaos, right? But in the 21st century, that chaos is very powerful. But that chaos has to be managed effectively. Thanks. That's a very good answer. Okay, I'll tell you something else. Yeah. If you can, this is a concept that's difficult. And I'll try it. Broadly, there are 2 philosophies in India. One believes in infinity, right? That says you will live forever, right? And the other that says you don't exist. Concept of shunyata or anatta in Buddhism, right? And India operates between these 2, right? The idea of non-existence or anatta as in Buddhism is the
essence of listening. So, if I'm sitting here talking to you, and I don't exist, right? That is absolutely the perfect way to listen to you. What do I mean by I don't exist? It means my aspirations don't exist. It means my fears don't exist. It means, I am sitting almost in silence, almost as if I'm dead and I'm listening to you. That's something Indian people can do. It's a very powerful thing, right? And if you look at our, so to speak, the grandmasters, people like Gandhi, that's actually what they're doing, right? And it's a philosophical thing, but it's the power of the Indian civilization. It's where, the West got zero from. Yeah. Right? And then that, no, you're laughing, but then when that zero arrives in the West, it completely transforms and does something that it can't do in India. Right? Because when it comes into contact with your philosophy, the sum of both those things is much bigger than either of them. So to me, that's how I see it. I used to sit on a table when I was small, and my grandmother and my mother's father used to sit there at lunchtime, and they used to speak to each other, and I would just look at them, and they were two different worlds, right? My grandmother would be speaking something else, saying something, meaning something else, and my grandfather would be understanding something else, but the conversation was going on. And that to me is the essence of the thing, which is that I look at you and I say, he has ideas that are actually powerful and useful for me. And in turn, I have ideas that might be powerful and useful for him. And I think that's what's important in the 21st century. Yeah, I totally agree. Listening is great. By the way, as a final thing, I am a practitioner, and I'm sort of I deal in power, right? And I can tell you that, and this is something, it's a bit hard to grasp, listening is much more powerful than speaking. There's no comparison between the two. But for some reason, people are convinced that speaking is more powerful. Right? Even if you're speaking to me and I'm listening to you, I understand what you're going to do. Right? I can predict what you're going to do if I listen carefully. So many questions. The gentleman at the front, if you can tell us who you are and any affiliation, and the mic's coming to you, and please keep it to a question, not a statement. Thank you. Thank you very much. Hanif Adil, former advisor, British Parliament, British Government. The question, I'm going to come to the question. I just want to make one point. No point, sorry, just a question. Okay. Other people have contextual, questions. okay. Rahulji, thank you very much for your very sobering analysis. Clearly, the comparison between the RSS and the Muslim Brotherhood is an interesting one. The fact is, the BJP have captured the narrative and the institutions in a way that most people would have thought that they could not have. So clearly, listening, all the things you're doing are great. But in terms of a clinical approach, what would be your short to medium term plan in terms of projecting what you stand for, what your party stands for, what you want to achieve with the grassroots? And because you're taking on somebody who is a populist, who clearly has support, who's captured the whole state effectively. That's my question. Thank you. I think the walk that we did in the last 4.5 months is a powerful model, and I think it brings in a lot of the ingredients of a response to what you're talking about, and I think it works
for most of the opposition in India. It's acceptable to most of the opposition in India. So reaching out to the people in interesting ways and making sure that you're having a direct connect with people and building a new imagination, I think is central to fighting the BJP. Also, don't underestimate the resistance. Authoritarian people like to demonstrate how powerful they are and how strong they are. The resistance in India is also very strong and very powerful, and can do wonders. And the lady in the cream jumper just behind. But you know what? If we step back from the BJP Congress conversation, what's actually happening is a huge transition in India, right? Huge migration of people. And India is now searching for a new model with which to engage with its people and the rest of the world, right? And what's pretty clear is that the BJP model is not it, because it's creating much too much turbulence, much too much resistance. So the real challenge that people like me and other leaders in the opposition have is, what does that thing look like? Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now, you spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem. And the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. So it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. I'm going to ask an online question, quite a pointed one, from Saeed Badrul Ahsan, who says, would Mr. Gandhi agree that dynastic politics has by and large impeded the growth of democracy in South Asia, in India, Pakistan and Bangladesh? I mean, I think impeded the growth of politics. Of democracy in South Asia. No, I think the structures that are playing out and are impeding democracy are much more structural and way beyond dynastic politics. I mean. Okay, gentleman at the front here. Thank you. Hi, Rahul. I had a question around China. Tell us who you are, sorry. Sorry, my name is Bharat. I'm from Rio Tinto. And Bharat. Bharat, yes. The question I had was around China. I think you're on record saying that this government doesn't quite understand the nature of the risk that China poses. And I'm just curious to understand what, in your estimation, is exactly the nature of that risk. And fundamentally, what are these guys not getting? Thank you.
if you look at what has happened in Ukraine, right? The basic principle of Ukraine, the basic principle that has been applied in Ukraine is that the Russians have told the Ukrainians that we do not accept the relationship you have with Europe and America. And if you do not change this relationship, we will change your territory. We will challenge your territorial integrity, right? In my view, that is what is happening on the borders of my country. What China is threatening, China does not want us to have a relationship with the United States. And it is threatening us by saying, if you continue to have this relationship with the United States, we will take action. And that's why they've got troops in Ladakh, and that's why they've got troops in Arunachal Pradesh. So in my view, the basic idea behind the troops in Arunachal and Ladakh is similar to what is happening in Ukraine. I mentioned this to the foreign minister. He completely disagrees with me, and he thinks this is a ludicrous idea. It's fine. We have a difference of opinion. Yeah, the lady in the third row in brown jumper. Hello, thank you very much. Yes, no, it's me. Thank you very much. My name is Malini Mehra, and I run an international parliamentary organization that works on climate change. But my question is raised to you as a citizen of India. There are many of us in the international diaspora. There are something more than 20 million Indians in the international diaspora. You spoke about the need for India to address these issues by itself, not within its own borders, because you have the international diaspora. And many people like myself no longer... Sorry, which issues? The environmental issues? No, the issues facing India, the democratic despair that the country is in. So here is my question. And I ask it as someone who is one of possibly millions who no longer recognizes the country that they were born and raised in. And we would like to know what your message is. Is that a bad thing or a good thing? What do you think? No, I'm asking you. Why am I here? I don't know. I'm here because I am feeling wretched about the state of my country. Yeah. Absolutely wretched. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. So for those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? 20 years ago, I worked with Professor Amartya Sen. And Amartya didn't let go of his passport. I'm not getting rid of my passport, and I want to know what can we do to reanimate our democratic institutions. Well, I like your energy. It's very important. It's very important. And it goes to the point of the resistance. You see, the resistance is sitting here. I meant that the battle for the democratic institutions of India is frankly India's responsibility and no one else's, right? And it's something that we are doing. But you, of course, are Indian, so it's your responsibility as well, and you're part of that discussion. I think when you express yourself, I think what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he's fighting the RSS, he's fighting the BJP, he might be biased, right? But for you to say it, it has a totally different impact. So you're by expressing yourself and by making your position clear, you're already helping in a big way, right? I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. So thank you.
I'm going to go to a question right at the back. The gentleman in the corner in the glasses, just behind the door. Thank you. And then I'm going to come to this side next. Hi, my name is Shoaib. I'm just a keen follower of the Indian politics. First of all, Rahul, thank you very much for giving someone else the opportunity to become the president in your party. And the second question is, do you think to implement your philosophy and your vision of the Indian politics, probably you need to win the elections. And to win that elections, you need to defeat BJP. But do you think with Mr. Kharge as a party president, you are well equipped to defeat BJP in the next elections? Look, Mr. Kharge was elected as president in a election that took place in the Congress party, and he is the president of the Congress party. We are all working together to fight the BJP, and I'm extremely confident in Mr. Kharge's capabilities and his expertise. I don't know if you know his history. Do you know his history? I mean, he was a Congress worker. He's been a Congress worker for many years, and he's come up the ranks, and he's an extremely capable, dynamic person. So I'm very confident in his leadership. I'm going to come over here. Maybe the gentleman at the front in the hoodie. Hi, I'm Sriram. I'm a Chatham House member. I just wanted to ask you, is there any type of new policy like how Jawaharlal Nehru ji introduced the non-alignment movement policy? Is there any changes that you want to introduce in the Indian foreign policy? As I said, the principle of foreign policy is unfortunately self-interest, right? And any Indian government would pay attention to that. So in answering that question, the first step is what is important to us as a country, right? What are we trying to do? And what we're trying to do is, we were a rural country and we are making a transition into an urban country. And this transition has a huge amount of energy, right? Potential for violence, but also potential for prosperity, potential for transformation. And we're trying to manage this energy as it's moving, right? If you look at our policies, or the UPA policies, they were all about trying to manage this transition from a rural to an urban connected country, right? So our foreign policy will follow that idea, right? Our foreign policy will reflect that, right? What would we like to do? We would like to build a society that's productive, a society that allows our people to have an imagination, to live happily, to be educated, to have a certain amount of health care. Those are things that's what our imagination is. And our foreign policy will align with that. I've got a question online about climate change from Arita Segal, who says, what is your vision on decarbonizing India when China controls so much of the supply chain, I guess, for renewable energy? See, I mean, on the climate change issue, interesting thing I noticed in the walk was that pretty much everywhere we went, they were speaking about climate change, but they were speaking about it locally. So they were saying, look, it's terribly polluted, the water is very bad, it's got fluoride in it, but they were not making the connection between their local problem and the global problem, right? So I was thinking that it's important in India that we start to push that idea that this local problem is connected to the global problem. So that's one aspect of the yatra that came out. On, what is the vision for carbon? These things are not things that one person visualizes and suddenly says, this is my vision for carbon. I mean, that would be insanity, right? The way to do it is
you have a conversation with people, you have a conversation with stakeholders, and you say, okay, so what is the best way forward? And that's an evolving conversation. A lot of people they think that leadership is about, sitting there and just coming up with these ideas, and it doesn't work like that. It's about talking to people, understanding, what the best, most optimal outcome is, and then heading slowly in that direction. Yeah. Gentleman here in glasses, at the third row, in the middle block. Thank you. My name is Zaid Haroun, and I'm just a member here. But I wanted to ask you I know there were a lot of conversations about the narrative being taken over by BJP and RSS views, and you spoke about the challenges China brings about. But I wanted to ask you, would your views or Congress views differ from BJP's on Pakistan, and if there's any difference? I mean, my personal view is that it's important that we have good relations with everybody around us, right? But that also depends on the actions of the Pakistanis. Now, if the Pakistanis are promoting terrorism in India, that becomes very difficult to do, right? And that does happen. We've got time for one more question. I think the lady here in the fourth row in this block here. Last question. Hi, my name is Varsha Varghese. I recently graduated from SOAS University of London, and I come from Kerala. So my question is, during the Bharat Jodo Yatra, you mentioned you listen to many people. And as much as I value the importance of listening, when people come to you, they look as someone who has a possibility of changing their lives or improving their lives. So as someone who has a possibility of becoming the future Prime Minister of India, what do you think? What actionable plans would you undertake? I mean, that's a very wide canvas you've given me. I mean, in what space? This is something I could possibly improve, or this is something that I should do if there is an incident that has touched you or anything. In the yatra? Yeah. In the walk, a lot of women came up to me, and quite a few of the women spoke about violence that had been done to them. And in one of the cases, actually in many of the cases, but in one particular case, I won't go into the details, but in one of the cases, I asked the girl, listen, she had been attacked, she had been molested, raped, and I asked her, listen, should we call the police? And she said, no, don't call the police. I don't want you to call the police. And I said, why don't you want me to call the police? You've come here, you've told me this, and now you don't want me to call the police. And she says, yeah, I don't want you to call the police because then I will be shamed, right? So to me, that was a very striking thing, that here's this young girl who suffered this violence against her. And now she cannot act on that violence because she's scared that she'll be shamed. So I was thinking to myself, this poor girl is now going to live the rest of her life never telling anybody this. And it's going to multiply the pain of what happened to her. So that is something I think I would like to change, that the level of violence against women reduces, and particularly this idea of shame, which is completely a ridiculous idea, is changed. Thank you everyone for joining us today. Thank you, Mr. Gandhi, for your time and taking all the questions. I'll certainly do my best in future to not exist in the right kind of way and listen better. But yeah, please join me again in giving another round of applause to Rahul Gandhi. Thank you. Thanks so much.